Hello students, welcome to the class. I am Shriti Sharma. I hope all of you are in the best of health and spirits. So let me just tell you about myself a bit. I have done my MBA in finance and my MA in English. I write CAT pretty frequently, get a great percentile in the verbal section. I've been the verbal head in various institutes pertaining to CAT and other management entrance tests, and I have around 14 years of teaching experience in this field now. My referral code is Sharmaji. Apart from that, let me tell you about our scholarship programs, scholarship tests. The last one is conducted on the 26th, and then we have more to go. The next one is on the 6th of Feb and then the 13th of Feb. Through the scholarship test, you can, of course, win scholarships up to 100%. The first 50 rankers get that. Apart from that, these are free tests. They're curated by experts. You get great detailed analysis and video solutions of these. Of course, you should also write the CAT Combat every Sunday, getting free tests and chance to win scholarships again. We have got a very long passage today and we are going to do that. Before that, for some warm-up, we are first going to take a look at words and their meaning. So it won't take a lot of time, but the reading comprehension part will definitely take a lot of time. Alright, so थोड़ा सा vocab पहले देख लेते हैं. We have to figure out the meanings of these words. The first word given here is counterfeit. Uh, Let me check the volume. Alright, seems fine. Counterfeit का मतलब क्या होता है? The meaning of counterfeit is something which is not genuine, something which is fake. Like counterfeit notes are fake notes. बहुत common usage है. Counterfeit notes जब हम कहते हैं, that means they are fake notes. Alright, so counterfeit is fake. I remember that for fake we had done another word with mal, if you remember. Malified का भी meaning fake था, remember? Malified is also fake. क्योंकि mal होता है bad, fight is faith, so malified is in bad faith, fake. Or bona fide is something which is genuine. Bona fide is not fake, genuine. Alright, the next word is accelerate. What does it mean? Accelerate का मतलब क्या होता है? To? क्या होता है? Okay, Democrat has given the answer the first one. One is A, correct. Second, accelerate is to increase the speed, right? I'm sure everybody who drives definitely knows this one. To speed up. We need to accelerate the process of preparation. We need to speed up the process of preparation. Just an example. Alright. Okay, SB is saying 2 is C, that's correct. Democrat also got C, perfect. Feud बताइए, what is a feud? बहुत common usage में हमने देखा है, न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि it was a matter of family feud. बहुत बार यूज होता है, तो फैमिली के साथ भी यूज होता है, किसी भी तरह से यूज हो सकता है. फ्यूड होता क्या है? फ्यूड होता है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? वेरी गुड, डी, dispute. A family feud is a family dispute. So feud is basically a dispute. है ना? A disagreement, a dispute, or a fight. Dictator is definitely not a young genius. No. What is it? Fourth one. यहाँ पे अब तो ऑप्शंस में हमको देखना है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है करेक्ट आंसर? यस, ऑल ऑफ SB Democrat, all of you got it right. A powerful leader, right? As options, an authoritative leader, an authoritarian is a dictator. What is the word for a young genius? Is there a word for that? Young genius के लिए हम क्या कहते हैं?
prodigy. Prodigy is somebody who is like a genius, who is too mature for his or her age in a very intellectual way. A child prodigy is basically a child who is genius. Like maybe a child prodigy could be a piano player. He is a child, but he plays the, or she is a child, but she plays the piano like an adult. So well, so prodigy is the word. Yes, Democrat has written that word. Perfect. Hello, Saurav. Yes, precocious is also, if somebody is precocious, they are extremely mature for their age. They are genius. They're very good. In a very good way, they are. So, okay, it's fine. All right. We were here. Oh no, we were here. Yeah. Prodigy is also a child who is a genius. Precocious is also for somebody who is too mature for his or her age, but in a very positive way. अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है. प्रोडिजी का मतलब होता है जीनियस, राइट? Especially a child prodigy is a very common usage, but prodigious का अलग मतलब होता है, एकदम ही अलग. Prodigious. Prodigious is something which is huge, big, gigantic. तो ये एकदम ही अलग होता है, ठीक है? और prodigal का मतलब भी बहुत अलग होता है. Prodigal का मतलब होता है wasteful. तो ये तीनों related नहीं है, एकदम ही अलग है. तो prodigy को prodigal से relate मत कीजिएगा, prodigious से relate मत कीजिएगा. All of them are different words. Alright, but लिख लीजिए, तीनों लिखिए. They can come as confusables, you know. जहाँ पे prodigy चाहिए वहाँ ऑप्शन में prodigious भी डाल देंगे, prodigal भी डाल देंगे ताकि confusion हो. So please write it down, the different meanings of all three. Waiting for you to write it down, huh? Okay, आगे बढ़ते हैं. Devour. Devour का मतलब क्या होता है? Devour का मतलब होता है अच्छे से पूरी तरह से खा जाना. To eat up. Alright, we devoured the meal मतलब पूरा ही खा गए और खूब अच्छे से खाए. We devoured the sumptuous meal. Alright, to eat up. Yes, Priya, 5 is A. Yes, SB, 5 is A. Perfect. Devour होता है अच्छे से खाना, ठीक है? जो आप लोग कह रहे हो ना निगल जाना या गल्प कर लेना, उसके लिए वर्ड है gobble. Gobble is like you eat very fast. Devour is अच्छे से खाना, मतलब you completely ate it, पूरी तरह से खा लिया. That is devour. कुछ भी छोड़ा नहीं, खूब अच्छे से भरपेट खाया. That is devour as a verb. आप जो कह रहे हो कि निगल लेना और चबाना नहीं, for that the word is gobble. Gobble is like again, you are eating very fast and a lot, but you don't chew it properly. You just swallow it down. Gobble is to like swallow it down, to swallow the food without chewing properly. Alright, that's the word for it. Hello, Motin. वैसे मोतीन आज ज़्यादा देर का vocabulary है नहीं. We will like we'll be quickly going back to reading comprehension, but the reading comprehension is also kind of very vocab centric. देखिए sort of gluttony. Glutton is one who eats a lot. All right, gluttony is that the noun form characterized by eating a lot. Gluttony. Gobble is a verb. Gluttony is a noun. Devour, I devoured my food is a verb. Devour और gobble same नहीं होते हैं, अलग मीनिंग होता है. I devoured my food मतलब अच्छे से मैंने खाया, ठीक है? एकदम पूरा eat up किया, कुछ छोड़ा वोड़ा नहीं. All right. And gluttony क्या होता है? Gluttony भुक्खड़पन. That is gluttony. All right. एक वर्ड होता है इंग्लिश में वाइस. VICE. वाइस का वाइस प्रेसिडेंट वाला वाइस नहीं. वाइस का एक मतलब होता है बुरी बुरी आदतें, ठीक है? बैड कैरेक्टरिस्टिक्स, बैड हैबिट्स.
तो वाइस में ऐसा इंग्लिश में बहुत कहते हैं कि लेजीनेस इज अ वाइस, वैसे ही ये भी कहते हैं कि ग्लटनी इज अ वाइस, ऐसा बोलते हैं। अब वो तो आई वुड से इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, बट ठीक है, ये जनरली कहा जाता है कि ये तो ग्लटनी, लेजीनेस, दीज आर वाइसेस। लेजीनेस इज अ वाइस और ग्लटनी इज अ वाइस। ऑलराइट, मूविंग ऑन। रिकॉर्ड सिक्स का बताइए। यस यस, yeah, Martin, you're right. Laziness, gluttony, lust, all of them are vices. है ना? Sloth, जो आप sins की बात कर रहे हैं, the seven deadly sins, yeah, these are the sins. Correct. आगे बताइए. Record, very simple. I think all of you would be able to answer them. सबका definitely आ जाएगा record. Record के लिए. Yes, औरत्र, Martin, correct. Record का मतलब होता है, यही होता है ना, to set down in permanent form. मतलब किसी का वॉइस आप रिकॉर्ड, कोई कुछ बोल रहा है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो एक परमानेंट फॉर्म में उसको कैप्चर किया ना। किसी का वीडियो रिकॉर्ड किया, परमानेंटली कैप्चर किया एक परमानेंट फॉर्म में। तो सी तो नहीं होगा। सी का मतलब होता है फेंक देना। डिस्पोज ऑफ का भी मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, बट रिकॉर्ड इज नॉट दैट, है ना। सेवेंथ बताइए। ओके, तो प्रिया ने सेवेंथ का आंसर दे दिया था। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। या टू प्रिज्यूम इज टू, यस, वेरी गुड। सेवेंथ इज करेक्ट। Priya, Martin, SB, yes, Bobby. Sixth is A, correct. Seventh हो गया C. And presume is to, I presume, so I expect something. It's similar to assume. All right. It is similar to assume, to expect. चलिए, two more questions. Clutch का बताइए, ninth and tenth का आंसर बताइए. Clutch. Yes, seventh is expect, correct. Ninth or tenth. एक क्लच होता है जोर से पकड़ना, टू क्लच समथिंग। ऑफ कोर्स, आई मीन क्लच, ब्रेक, कार वाला तो अलग बात हो गया, या बाइक वाला, बट क्लच इज टू होल्ड टाइट. Quite a few of you did get it, of course, to hold tight. If you clutch something, you hold it tightly. Hmm? जोर से पकड़ना, used as a verb. As a verb. गाड़ी में जो क्लच होता है वो नाउन की तरह यूज होता है, राइट. एज अ वर्ब मतलब जोर से पकड़ना. He was clutching the handle. बहुत जोर से हैंडल पकड़ा हुआ था. तो या, नाइन्थ इज सी, करेक्ट. और टेंथ आप लोगों ने क्या बताया? Tenth, all of you are saying D. Tenth is perfect. To acquire is to get. Perfect. Very good. Acquire is to get something. To take something up. To take over. Perfect. To take over is to acquire. To overtake is different. किसी पे आगे निकल जाना. But to take over is to acquire. All of you got the right answers. Very good. अब हम आएंगे reading comprehension पे, which is going to be pretty time consuming today. First take a look at the questions. What is the thesis statement? ये हमने दोपहर को भी आज किया था. सेम पैसेज नहीं था, सेम क्वेश्चन नहीं था, बट थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है ये था. The thesis statement is the statement which would be mentioned somewhere in the passage, और उसके बाद उसी पे elaborate करता है पूरे passage में author. That is what the thesis statement is. दोपहर को भी हमने किया था on a different passage. As used in paragraph 1, what is meant by scrupulous pedanticalness? तो अब मीनिंग इसका आपको पैसेज से फिगर आउट करना है. As used in para 2, which of the following best describes something that is superfluous? ये सुपरफ्लुअस वर्ड मैंने काफी बार वोकैब्युलरी में कराया है, तो वो वर्ड का मीनिंग आपको समझना है. उसके बाद ये सिचुएशंस दिए हैं. पैराग्राफ 2 में भी यूज हुआ है सुपरफ्लुअस.
पर ये अलग सिचुएशंस हैं, ये 5 सिचुएशंस एकदम ही डिफरेंट है। आपको देखना है कि विद सिचुएशन encompasses the idea of superfluity और superfluous को encompass करे. All right. Now क्वेश्चन 4 में हमको बताना है ऑथर क्या लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहा है, यानी कि क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा है. तो मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम पैसेज पे जाएंगे, या फिर आप लोग यू गाइस कैन ओके. सौरभ, स्क्रूपलस का मतलब होता है यू आर रिटन अनैथिक. नहीं, स्क्रूपलस का तो मतलब होता है केयरफुल. और इवन इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रिंसिपल्स की भी बात करें तो स्क्रूपलस वो इंसान होगा जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. ऑलराइट. जो भी हो, क्वेश्चंस तो आप कर लेना पैसेज देख के, बट उसके पहले ये डिस्कस करते हैं. ये देखिए, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है. ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में क्या आंसर है वो तो फिगर आउट करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू नो ऑल दीज फिगर्स ऑफ स्पीच. तो बताइए इन द चैट्स, टेल मी व्हिच वंस आर यू अवेयर ऑफ. ऑनोमेटोपिया के बारे में पता है, हाइपरबली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सिमोरॉन, किस किस के बारे में पता है, व्हाट आर दे. ओके, सौरभ हैज रिटन हियर hyperbole means अधिक बोलना. Yes, in a way, hyperbole, some people pronounce it as hyperbole, actually means exaggeration, बढ़ा चढ़ा के बोलना. तो आप सब लिख लीजिए exaggeration, यानी कि पहले उसका सिंपल वर्ड लिखते हैं ओवर स्टेटमेंट. फर्स्ट राइट दिस डाउन, ओवर स्टेटमेंट. The ones who know about exaggeration, they can write exaggeration. The ones who don't can write overstatement. Alright, बढ़ा चढ़ा के बोलना. Maureen is aware. Alright. Okay. What is metaphor? और मेटाफोर जब भी डिस्कस करते हैं साथ में सिमिली तो डिस्कस कर ही लेना चाहिए, बिकॉज यूजुअली दे कैन बी सिमिलर, दे कैन गेट कंफ्यूजिंग बेसिकली. बताइए, व्हाट इज अ मेटाफोर? मेटाफोर क्या होता है? डिस्कस तो हम सब करेंगे, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम. Most of them are symbolic because they are used as they are not literal, so most of them are symbolic basically. Maureen has written personification of inanimate objects as humans. Okay, you have given the definition of personification. All right. Okay. ठीक है. An oxymoron is contrast. ठीक है, आपने short में लिख दिया है. Anshul has written phrase applied to an object or action. ये आपने शायद onomatopoeia के लिए लिखा होगा या metaphor के लिए लिखा. Okay. Hyperbole हमने सबसे पहले लिखा is an overstatement or exaggeration. Metaphor में comparison होता है, पर किस तरह का कंपैरिजन होता है? इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन, क्योंकि इसमें एज या लाइक जैसा वर्ड यूज नहीं होता है. ठीक है, दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन इज मेटाफोर. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ लायनस इन द बैटल. शी वॉज अ लायनस इन द बैटल. इन द बैटल की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स हम रियल लायनस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वहां पे पर ये नहीं कहा शी वॉज लाइक अ लायनस, शी वॉज लाइक अ टिग्रिस. नहीं, शी वॉज अ लायनस, तो ये हो गया मेटाफोर. He was a lion in the war on the field. He was a tiger in the field. तो ही आइडिया है कि ही वॉज लाइक अ टाइगर, पर डायरेक्टली कह रहे हैं ही वॉज अ टाइगर तो बन जाता है मेटाफोर. और अगर आप कहो ही वॉज लाइक अ टाइगर, ही वॉज फाइटिंग लाइक अ टाइगर, तो वो हो जाता है सिमिली. आई एम नॉट राइटिंग ऑल ऑफ देम डाउन. आई होप आप लोग लिख लेंगे. ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए सिमिली और मेटाफोर के. गिव मी एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एंड एज वेल. He fought like a tiger होगा सौरभ, that would be a simile,
क्योंकि लाइक आ गया, लाइक नहीं आया, ही वॉज अ टाइगर बोल दो तो वो मेटाफोर हो जाता है। ऑनोमेटोपिया क्या होता है? ऑनोमेटोपिया इज व्हेन बेसिकली आप किसी वर्ड, आप कन्वे करना चाहते हो एक वर्ड, बट आप उस वर्ड का, उस चीज का नाम नहीं ले रहे हो, आप यू आर कन्वेइंग दैट वर्ड बाय द साउंड दैट इट मेक्स, ऑलराइट, यू आर कन्वेइंग अ पर्टिकुलर वर्ड बाय द साउंड दैट इट मेक्स। हिंदी में हम लोग बहुत बार रेलगाड़ी के लिए छुक 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 पढ़ते थे, सो दैट छुक 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 इज ऑनोमेटोपिया। पॉप ऑफ द बॉटल, बेसिकली एक बॉटल का आप कैप खोलते हो जिसमें फिज हो, तो पॉप आवाज आता है, तो वो पॉप जो है दैट्स ऑनोमेटोपिया। ट्रिंग ट्रिंग फॉर टेलीफोन इज ट्रिंग ट्रिंग यूज करना, तो दैट वर्ड ट्रिंग ट्रिंग यूज टू रिप्रेजेंट अ टेलीफोन इज ऑनोमेटोपिया। इसको कहते हैं ऑनोमेटोपिया व्हेन द साउंड मेड बाय अ पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली यूज्ड टू कन्वे दैट थिंग, इसको कहते हैं। Very good. Anshul has given an example of metaphor. Correct. You have a heart of gold. You have a heart of gold. Directly बोल दिया, ये नहीं बोला your heart is like gold. Directly बोल दिया heart of gold, तो वो metaphor हो गया. Alright. Onomatopoeia भी I hope yes. Ring, ring, ring. Fine. So that's onomatopoeia, hyperbole, and metaphor. Personification is, ये तो नाम से ही दिख रहा है, पर्सन, इंसान, पर्सोनिफाई करना। तो किसी इनएनिमेट एंटिटी को, किसी थिंग को ह्यूमन की क्वालिटीज दो या ह्यूमन की तरह ट्रीट करो, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, ऑलराइट। तो कोई भी इनएनिमेट चीज ले लीजिए, उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट कीजिए, पर्सन की तरह ट्रीट कीजिए, आपके शब्दों में वो दिखना चाहिए, दैट्स पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, द स्माइलिंग मून, दैट्स पर्सोनिफिकेशन। मून के साथ स्माइलिंग डाल दिया, स्माइलिंग जो इंसान के लिए हो सकता है, मून के लिए डाला, तो ये मून को आपने पर्सोनिफाई किया। द काइंड द काइंडनेस ऑफ सन, SUN, वो भी पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि काइंडनेस इज अ क्वालिटी दैट विल बी एसोसिएटेड विद ह्यूमंस, ऑलराइट। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। आप अपनी तरफ से एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ओके। ऑक्सीमोरॉन इज, ऑक्सीमोरॉन में कॉन्ट्रास्ट होता है, यस, basically two opposite words are placed together, two opposite ideas are placed together, and still they convey uh, a logical sentence or meaning. That's oxymoron. Two opposite words placed together conveying logical meaning would be oxymoron. For example, she is clearly doubtful. So doubtful or clearly opposites हैं. But यहाँ पे there is a meaning to the sentence. So that's oxymoron. ठीक है. और एक एग्जाम्पल जो मैंने काफी बार दिया है, the dog is pretty ugly. Without looking at the passage, why don't you guys try out this question? ये तो डायरेक्ट आप अच्छे से एनालाइज करो, सोचो इस बारे में, और गिव इट अ ट्राई, नो। यार मुझे यहाँ लैगिंग नहीं दिख रहा है, कैसे, कहाँ पे लैग हुआ? यहाँ पे तो वीडियो चल रहा है। Yes, Martin, the room is completely empty. Perfect. Bobby, the example you have written, that's a simile. Like word डाल दिया ना, तो दिख जाता है कि comparison हो रहा है. Like, जैसा, जैसा. Like या as डाल दिया तो वो हो जाता है simile. Like या as नहीं डाला तब वो metaphor होता है. हाँ, wrath of thunder, WRATH, wrath of thunder अगर आप कहते हो, anger of thunder, तो yes, that would be personification, yes.
Wrath of the Sun, yes, Martin. Wrath of the Sun would be personification. Sun का गुस्सा, है ना? वेटिंग, आप लोग ये ट्राई कीजिए, बताइए आंसर क्या हो गया. To begin, hard inverted commas में, यानी author is talking about the word hard, I guess. Because haven't seen the passage, right? Yes, आगे लिखा है, it is a utilitarian word that gets the job done. Okay, I did say ugly. I don't know why I wrote dog. The dog is pretty ugly. That's oxymoron. Pretty and ugly together is oxymoron. So SB is saying the answer should be E for this one. वो मैंने गलती से dog is pretty dog लिख दिया था, पता नहीं क्यों, पर मैंने बोला था the dog is pretty ugly. तो pretty ugly जब साथ में आता है, that's oxymoron. The two opposite words are placed together and they convey a logical idea. Opposite words are placed together. SB E नहीं होगा ऑक्सिमोरॉन में. अगर आप ऑक्सिमोरॉन कह रहे हो तो यहाँ पे कोई भी दो ऑपोजिट वर्ड्स आपको साथ में दिख रहे हैं क्या? नहीं ना, एकदम साथ में कोई भी दो ऑपोजिट वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान दो तो. देखिए, ऑक्सिमोरॉन ऐसा नहीं है कि ऑपोजिट आइडियाज दिए हैं तो ऑक्सिमोरॉन हो गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं है. उसके लिए पैराडॉक्स भी होता है, आयरनी भी होता है, बहुत कुछ होता है, एंटीथीसिस भी होता है, अलग अलग चीजें होती हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में जहाँ ऑपोजिट्स आते हैं. तो हर चीज में मतलब बहुत ही सटल डिफरेंस होता है जो आपको क्लियर रखना है. तो ये ऑक्सिमोरॉन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी. अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बताओ, कोई भी दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं क्या जो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो और साथ में रखे गए हों? आंचल, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू एनालाइज इट. ट्राई तो करो, एलिमिनेट करो अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो. Yeah, Achal thinks it's D, Maureen thinks it's D. Let's check it out. देखिए, टू बिगिन विथ, हार्ड इज, तो ऑथर कह रहा है ये जो शब्द है हार्ड, ये शब्द प्रेगमेटिक है एंड रियलिस्टिक है. प्रेगमेटिक का भी मतलब होता है प्रैक्टिकल. ये जो शब्द है बड़ा प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक है. शब्द को कह रहे हो, एक शब्द को आप कह रहे हो कि ये शब्द प्रैक्टिकल है, एक शब्द को कह रहे हो कि ये शब्द रियलिस्टिक है, आगे कह रहे हो इट्स ग्राउंडेड इन रियलिटी, फिर कह रहे हो कि ये शब्द यूटिलिटेरियन है. दैट गेट्स द जॉब डन, जो काम कर गेट्स द जॉब डन एंड डजंट अपोलोजाइज. ये शब्द ऐसा है जो सॉरी नहीं बोलता. शब्द कब से सॉरी बोलने लगा? इंसान सॉरी बोलता है.
तो आप जब कहते हो मैं अपोलोजाइज नहीं करती, यहाँ पे कह रहे हैं ये शब्द अपोलोजाइज नहीं करता फॉर इट्स अनकूथ नेचर. अनकूथ इज राउडी. ये शब्द अपोलोजाइज नहीं करता फॉर इट्स राउडी नेचर. शब्द के लिए कह रहे हो कि उसका नेचर राउडी है. On the other hand, difficult, the word difficult is eloquent and refined. The word difficult is civilized, willing to expend the effort. ये सारी चीजें आप इस तरह से कह रहे हो जैसे कि ये वर्ड्स ना हो, इंसान हो. इंसान के लिए कहते हैं ना कि दिस पर्सन इज pragmatic and realistic, this person gets the job done, this person does not apologize for his or her brusque uncouth nature. आगे भी जो है डिफिकल्ट इज eloquent and refined. डिफिकल्ट हटा दो. Tom is a person. Max is eloquent and refined. Max is civilized, willing to expend the effort, you know. Expend the effort is effort डालना, necessary to appear urbane. तो ये इंसान के लिए यूज होना चाहिए पूरा सेंटेंस, पर आप एक शब्द के लिए यूज कर रहे हो, तो आप पर्सोनिफाई कर रहे हो उस शब्द को. तो या the author has personified the word hard, and the author has also personified the word difficult, treating the word as if they were people. And this is what personification is. Alright, I hope personification is clear to you guys. Moving on. अब तो सारा पैसेज पे बेस्ड है, बट आप देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे एक और आया, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन पैसेज 4, इट कैन बी इन्फोर्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंटेन्स अ टोटोलॉजी. ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं बाय द वे. कैट में तो किस तरह से आ सकता है आप देख रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बट अपार्ट फ्रॉम कैट दूसरे हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है फिगर्स ऑफ स्पीच. टोटोलॉजी इज वेयर द redundancy of words, repetition of words या redundant. एक्चुअली जब हम लिटरेचर या इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम कहते हैं गलत है, redundant है कोई वर्ड, मतलब इसका ज़रूरत नहीं है. पर जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो इस ये जो बिना ज़रूरत के शब्द जो यूज़ हो रहा है उसको टोटोलॉजी में डाल देते हैं कि इसको एक अलंकार मान लेते हैं, एक ब्यूटिफिकेशन मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूँ. द बिल्डिंग is surrounded by trees on all sides. तो ये रिडंडेंट हुआ ना. सराउंडेड का मतलब ही है कि हर तरफ से. सराउंड का मतलब ही होता है घेर लेना. तो ये ऑन ऑल साइड्स, तो ये यूजलेस हो गया. तो इसको कहते हैं, ये एक ग्रामेटिकल एरर भी होता है, इसको रिडंडेंसी कहते हैं. पर एज अ फिगर ऑफ स्पीच इसको टोटोलॉजी कहते हैं. ऑलराइट. जैसे कि बो डाउन, बो डाउन टू द क्वीन. अब बो का मतलब ही होता है झुकना, तो डाउन हो गया ना, टोटोलॉजी हो गया या फिर रिडंडेंसी हो गया. ऑलराइट, मूविंग ऑन. Yeah, you can actually figure out the answer right now. Tell me, what's the answer? मतलब बिना पैसेज पढ़े ही हम लोग क्वेश्चंस करने में लगे हुए हैं. बताइए कौन सा टोटोलॉजी. विद द डेफिनेशंस वी डिस्कस्ड, आई एम श्योर यू शुड गेट द आंसर. देखिए डी नहीं होगा. हेक्सागन्स हैव 6 साइड्स, ये तो डेफिनेशन हो गया ना. अगर डी टोटोलॉजी होता तो कौन से वर्ड को आप कहते हो टोटोलॉजी है. क्या मैं 6 हटा दूं? क्या साइड्स लिखा है तो उसमें 6 आ जाता है? हेक्सा का मीनिंग अगर मैं ये कहूं भी कि हेक्सा मीन 6, तो यहाँ पे कोई टोटोलॉजी नहीं है क्योंकि मैं मीनिंग बता रही हूँ. अब यहाँ बिल्डिंग वाले सेंटेंस में बिल्डिंग इज सराउंडेड बाय ट्रीज ऑन ऑल साइड्स इज टोटोलॉजी, बट अगर मैं सराउंड का मतलब बता रही हूँ, सराउंड मीन्स टू कवर ऑन ऑल साइड्स, तब कुछ यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं है क्योंकि मीनिंग बताया मैंने, वर्ड लिखा है मीन्स. ऑलराइट, तब रिडंडेंसी तो नहीं होगा ना. यूफोरिया मीन्स हैप्पीनेस. अब यूफोरिया का भी मतलब हैप्पीनेस होता है, राइट, का मतलब ही होता है हैप्पीनेस, तो टोटोलॉजी नहीं है क्योंकि मैं मीनिंग बता रही हूँ, मीन्स वर्ड आया है वहां पे, तो डी नहीं होगा. The answer is yeah, A, correct. Who got it? Maureen had already written it down. A होगा free gift. गिफ्ट का मतलब ही होता है it is supposed to be free. उसके साथ free word की जरूरत है नहीं. That's tautology.
So it's A. Page received a free gift. और गिफ्ट भी कह देते तो मतलब समझ आ जाता. आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो. और ये फंडा समझो कि ग्रामर में इसको एरर मानते हैं कि गलत है, रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए, इसलिए ग्रामर में उसका नाम होता है रिडंडेंसी. और फिगर ऑफ स्पीच में उसको एक प्यारा सा नाम दे दिया है, टोटोलॉजी. ओके. It can be inferred that the author believes there to exist relationship between vulgarity of a word and. अब ये सब तो passage related questions हैं. एक और आया, एक और फिगर ऑफ स्पीच आया, मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ. यूफेमिज्म. Euphemism is it's basically a mild phrase instead of a harsh one. So euphemism is a mild phrase which is used in place of a harsh one. It's like diplomatic language. अच्छा शब्द, जैसे कि क्या? अच्छा, आपने किसका आंसर डी बताया? जैसे कि क्या यूफेमिज्म के लिए? खराब शब्द नहीं यूज करना. खराब छोड़ो, हार्श वर्ड्स यूज नहीं करना. If somebody is, what can I say? Yeah, somebody is handicapped, तो handicapped यूज नहीं करना. Specially abled कहा जाता है आजकल जो लोग handicapped हैं उनको. तो specially abled is a euphemism for handicapped. Just one of the examples of euphemism. Use a mild term, something that doesn't hurt a lot. All right. Orally challenged is a euphemism for deaf. तो ये है आपका euphemism. अब आप ऑप्शन देख के बता सकते हो. कहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई हार्श वर्ड की जगह कोई माइल्ड वर्ड लिखा गया है? यस बॉबी, हेक्सागन के होते हैं 6 साइड्स. तो वहां पे कुछ रिडंडेंट नहीं था ना, वो तो लिटरली डेफिनेशन बताया था. इट हैज मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 6 साइड्स. तो अगर कहीं पे टोटोलॉजी है तो वो वर्ड आप रिमूव भी कर दो तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा. गोइंग बैक टू दैट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को डाउट है टोटोलॉजी में, तो एक बहुत सिंपल तरीका है फिगर आउट करने का. वो वर्ड हटा दो. जैसे कि ए में मैंने फ्री हटा दिया. पेज रिसीव्ड अ फ्री गिफ्ट फॉर अ बर्थडे में फ्री हटा दिया. पेज रिसीव्ड अ गिफ्ट फॉर अ बर्थडे, मीनिंग वही है अभी भी कि उसको गिफ्ट मिला, और सबको पता होता है कि गिफ्ट के लिए पैसा नहीं देना होता है. पर अगर डी में हेक्सागन्स हैव 6 साइड्स से मैंने 6 हटा दिया, तो क्या हेक्सागन्स हैव साइड्स? तो ऐसे तो ट्राइंगल्स ऑल्सो हैव साइड्स, रेक्टेंगल्स ऑल्सो हैव साइड्स, पेंटागन्स ऑल्सो हैव साइड्स, ऑक्टागन्स ऑल्सो हैव साइड्स. तो फिर 6 हटा दिया तो मीनिंग तो सेम नहीं है. और क्या हटाएं? साइड्स भी हटा दें. हेक्सागन्स हैव, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया. हैव भी हटा दें. हेक्सागन्स, अब तो ये सेंटेंस ही नहीं है. दैट इज व्हाई इट्स नॉट द आंसर. दैट्स अ वेरी इजी वे टू चेक whether there is redundancy or not. वो शब्द हटा के देखिए, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है या बदल जाता है. अगर सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है, यानी कि वो शब्द जो था, जैसे कि फर्स्ट में ए में जो फ्री था, दैट इज that's the tautology, that extra word which can be removed. Alright. तो 11th का आंसर मोटीन ने दिया है, काफी पहले से ही दिया हुआ है. What about the rest of you? Yeah, Martin, you're right. This is the euphemism passed away. Passed away is a euphemism for dead. Right? Dan's father died last spring. तो died की तरह harsh word use नहीं किया, passed away use कर दिया. So that is a euphemism. So yes, the answer is B, beta. All right. और क्या है? With respect to the way in which close synonyms are commonly understood, the author's tone can be best described as. Okay. अब वो तो इस पे dependent है on the point.
चलिए, time for you guys to read the passage. Quite a bit to read. दोपहर छोटा सा passage था, अभी थोड़ा ज़्यादा है. So give it a read. Hello, Nashima. कि आप सबको ये पढ़ना है. I will try to quickly summarize the first slide. कह रहा है it is not uncommon. It is not uncommon को simply लिख लो. It is common. It is common for close synonyms to be understood to share the same meaning. तो बहुत लोग मान लेते हैं. Generally, it is common. ऐसा author ये नहीं कह रहा है कि close synonyms have the same meaning, but ऐसा समझा जाता है. लोग मान लेते हैं कि close synonyms have the same meaning. पर ऑथर का कुछ और व्यू है. हाँ, आगे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स लाइक हार्ड एंड डिफिकल्ट गोज ट्रैजिकली अननोटिस. मतलब नॉर्मल जनता नोटिस नहीं करती है डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड डिफिकल्ट. आम जनता उसको सेम मान लेती है. ट्रैजिकली अननोटिस, यू नो, वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ ट्रैजिक इन द आफ्टरनून टुडे. वन may employ one or the other with complete indifference. One is any person might employ hard or difficult with indifference. Indifference is like lack of concern. कुछ भी यूज कर लेते हैं, कभी hard कभी difficult. Postulating, assuming that there's no discrepancy between the two. Discrepancy is like difference. In general, this is well and good. Most people lack the scrupulous pedanticalness to quibble over such trifles. Quibble is to fight or quarrel. Trifles are small or minor or unimportant points. Actually, सच बताएं तो ये quibble, trifle, ये सब words आपने किए हैं. इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कितने बार कराए हैं ये वर्ड. दोपहर को ही ट्रैजिक कराया था, क्विबल काफी बार, ट्राइफल करा चुके हैं, स्क्रूपलस बहुत बार कराया, पेडांटिक कराया है एक्चुअली. नेवरदलेस फॉर दोज ऑफ, मैं अभी नहीं डिस्कस करी स्क्रूपलस पेडांटिकलनेस बिकॉज इस पे क्वेश्चन बेस्ड है व्हिच यू गाइस हैव टू ट्राई आउट. Nevertheless, for those of us with ample compulsiveness and time, it is of significant value to comprehend such nuances. Significant is important.
Significant is important. Comprehend is to understand. Nuances are subtle points, things which are not obvious, very, very minute points are nuances. Yes, Martin, for you, not very difficult because if you see it's vocab centric as well. Take, for example, the following sentences: the test was hard, the test was difficult. Is the difference within these synonyms readily apparent? Apparent is clearly visible. क्या clearly visible? क्या ये difference clearly visible है? Is there a noticeable difference between them at all? Indeed, these questions are valid and they deserve an answer. They warrant an answer. For what would be the point of having multiple words with the exact same meaning? That would be superfluous. The English language being far too economical. Economical is uh, actually economical is like when you are frugal. You why when you use resources wisely, you don't waste them. Not extra, not wasteful. तो author कह रहा है why would there be multiple words with the same meaning? That would be superfluous. English language is economical. मतलब English language wasteful नहीं है. Frugal है. Frugal is when you use resources wisely. You don't use a lot of them. While many close synonyms share familiar, if not the same dictionary definitions, the feeling or mood they convey is utterly singular. It's unique. Although a dictionary can provide information about word meanings, pronunciations, etymologies, inflected forms, derived forms, etc., it cannot communicate how it feels to use a word. All right, how it feels to use the word. अब उस पे elaboration हो रहा है next slide में. So please read the slide. अब author elaborate कर रहा है difference between hard and difficult. All right, I hope uh, everybody has read it.
हार्ड और डिफिकल्ट का डिफरेंस ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। पहले डिस्कस किया है उनके मीनिंग में जो हल्का फुल्का डिफरेंस आता है, उनके मैनरिज्म्स में ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करके उनके मैनरिज्म का डिफरेंस, उनके साउंड का डिफरेंस, उनके सिलेबल्स का डिफरेंस। नाउ सिलेबल इज अ वेरी ग्रामर भी क्या बोले, इट्स अ फोनेटिक्स थिंग। आप बहुत डिटेल में इंग्लिश पढ़ते हो तो सिलेबल्स भी पढ़ते हैं या स्कूल में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद बताया कि कैसे कैसे सिचुएशन में यूज हो सकता है और कैसे कैसे लोग इसको यूज कर सकते हैं, द डिफरेंसेस। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अगेन और दो वर्ड्स का एग्जांपल दिया है, हार्ड एंड सॉरी वियर्ड एंड स्ट्रेंज का। द डिफरेंसेस बिटवीन वियर्ड एंड स्ट्रेंज, यहाँ पे टोटोलॉजी और यूफेमिज्म सब यूज हो गया, बट वी ऑलरेडी आर डन विद दोस क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे भी सिमिलर है, पिछले ही स्लाइड की तरह है, बट दो अलग वर्ड एनालाइज किए हैं। यहाँ पे it doesn't end here, it's just stating, yeah, it's loaded with vocab, yeah, it is. We already have discussed tautology और euphemism, ये सब हमने पहले ही कर लिया। She is insulting, he or she is insulting your mother's cookies, stating that they taste bad. Whereas in the latter sentence, the second sentence, however, the speaker sounds as though the cookies simply taste different or unusual compared to what he or she is used to. The difference owing to is like because of the innocuous addition of too much flour. Innocuous is harmless. आज दोपहर को ही ये वर्ड भी किया था। और owing to means because of. Owing to is because of. ये बता रहा है कि जब कहते हैं कुकीज स्ट्रेंज हैं तो व्हाट कुड इट मीन। मूविंग ऑन।
Finally, let's look at the synonyms happy and glad. As in the aforementioned cases, यानी कि जो पहले mention हुए हैं, these words seem to have little or no discernible difference. Discernible is something which can be seen, perceived. कोई discernible difference नहीं है, बहुत little difference है. Take for example, Tommy is happy because he got a new bike and Tommy is glad because he got a new bike. Finally, चलिए लास्ट झलक का ये लिखा है फाइनली लेट्स लुक एट द सिनोनिम. अब पढ़िए ग्लैड और हैप्पी के बारे में. All right, happy and glad का difference in emotion with examples. Finally, the last slide. Granted, the notion that close synonyms can be used interchangeably is prevalent मतलब फैला हुआ है among, और notion मतलब idea. That close synonyms can be used interchangeably एक दूसरे की जगह पे. This idea is prevalent among English speakers. And alas, the dictionary, the text purported to be responsible for clarifying such issues is of little assistance. Little का मतलब होता है almost zero, no assistance. In the end, it is left to us, the speakers of the language, those actively responsible for maintaining its sustenance and generation, to understand how these words make us feel and what mood we are inclined to attach to them. Using the examples and insights described above, one may come to recognize these subtle yet crucial differences. Subtle हमने पहले ही discuss कर लिया. Nuances जो होते हैं, something which is not obvious, something which is very minor, very tiny. तो ओवरऑल आइडिया यही है कि ये जो सोच है कि क्लोज सिनोनिम्स इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ये सोच बहुत ही फैला हुआ है और डिक्शनरी भी ज़्यादा मदद नहीं करता इस चीज़ में. यानी कि इट इज़ लेफ्ट टू अस द पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज, यहाँ पे द लैंग्वेज इज इंग्लिश, कि हम ऐसी चीज़ों को क्लियर करें, क्लैरिफाई करें, तभी लैंग्वेज अच्छे से सस्टेन होगा, मेंटेन होगा, कंटिन्यू करेगा. एंड अभी ऑथर कह रहा है जो एग्जाम्पल्स और इंसाइट्स ऊपर दिए हैं, इंसाइट इज लाइक deeply something has been analyzed, one may come to recognize these differences. Okay. कुछ क्वेश्चंस थैंकफुली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो नहीं किए वो आपको अटेम्प्ट करना है. व्हाट इज द थीसिस स्टेटमेंट? इन अ वे द मेन आइडिया. मेन आइडिया असल जो भी थीसिस स्टेटमेंट है उसी पे पूरे पैसेज में ऑथर ने एलैबोरेट किया होगा, ये ध्यान रखिएगा. थीसिस स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑन विच द ऑथर हैज एलैबोरेटेड predominantly in the passage.
अगर आप ध्यान दें, सबसे ज़्यादा पैसेज में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा स्पेस किस चीज़ ने लिया है। एक स्लाइड में डिफिकल्ट और हार्ड के बीच के अंतर को पूरा एलाबोरेट किया, एक स्लाइड में वियर्ड और स्ट्रेंज के बीच के अंतर को पूरा एलाबोरेट किया, और एक स्लाइड में तीसरा क्या था, ग्लैड एंड हैप्पी के बीच के अंतर को एलाबोरेट किया. Weird and strange are close synonyms, but their meaning is similar. But are they the same? No, the feeling is not the same. तो यही चीज से 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा एलाबोरेट किया है, तो दैट इज द प्रीडोमिनेंट थिंग. विच ऑप्शन गोज विद दैट? Yes, Martin, Nashima, the answer is C. Correct. While many close synonyms share similar if not the same dictionary definitions, the feeling they convey is utterly singular, क्योंकि ये जो आइडिया है इसी को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है ना. ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मेजर चंक मैन, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया. हाँ, अरे आई थिंक आई केम टू द लास्ट स्लाइड और समथिंग. ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा जो एक्सप्लेन किया वही सेंट्रल आइडिया देगा, थीसिस स्टेटमेंट भी वही होता है. ओके, मूविंग ऑन. व्हाट इज मोस्ट लाइकली मेंट बाय स्क्रूपुलस pedanticalness? पहले ऑप्शंस देख लीजिए. माइल्ड क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इज ईगरनेस टू नो समथिंग. राइट, स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म इज डाउट, बीइंग डाउटफुल, शक करना, डाउट. Passionate indignation, indignation is anger over supposed injustice. Stubborn reluctance, reluctance is unwillingness. Excessive concern, आपको पता है. I will take you back to that part a bit. कि डाउट की बात हो रही है, ईगरनेस की बात हो रही है, एंगर की बात हो रही है, अनविलिंगनेस की या एक्सेसिव कंसर्न की. Scrupulous pedanticalness, paragraph 1. एक्चुअली देख के लग रहा है नशिमा कि कितना बड़ा भारी चीज होगा, बट आप ये कॉन्टेक्स्ट समझ जाओ ना, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा. उसके पहले ऑथर क्या बोल रहा है कि बहुत सारे लोग क्लोज सिनोनिम्स को सेम मान लेते हैं, जो डिफरेंस है हार्ड और डिफिकल्ट का उसको नोटिस नहीं करते, जो मन किया वो यूज कर लिया. फिर ऑथर कहता है इन जनरल ठीक है, most people lack the dash to fight over such minor points or to debate over such minor points. They lack the dash. They don't have the dash to debate over such minor points. They don't have the doubt. They don't have the anger, unwillingness. No, don't have the unwillingness kya hoga. They don't have the concern. They're not concerned about the difference in these words. So scrupulous pedanticalness would be excessive concern. Yeah. Okay. As used in para 2, which are the words following this describe superfluous? मैंने लाखों बार वैसे superfluous पढ़ाया है. Superfluous का मतलब होता है excessive, not required. Super is over, above. Fluous is flow, overflow. यहाँ पे भी देख लीजिए superfluous कहाँ था. What would be the point of having multiple words with the same meaning? That would be superfluous, that would be wasteful, that would be excessive, that would be extra. So, which of the following describes something which is superfluous? Excessive, extra, more than what is needed.
ओवरफ्लोइंग बोला ना, जरूरत से ज्यादा. जरूरत से ज्यादा. Yes, the answer is B. Demand had been overestimated. And as a result, 10,000 copies never left. वो superfluous हो गए. Very good. The answer is E. Perfect. Uh, Using information in para 3 as a guide, which of the following describes someone who is utilitarian? Utilitarian is basically something to do with utility. जरूरत. अगर आप utilitarian है तो basically you are very practical. You know, you're practical. जो चीज़ का utility है वो करना है, जो चीज़ का नहीं है वो नहीं करना है. Okay, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है. I think the last one is not suitable. Jeremy disdains anything artistic. Disdains is hates. He feels that the appreciation of art is a waste of time and cannot understand how people spend their days lost in such fruitless endeavor. But utilitarian का meaning practical. ए जो है कि प्रैक्टिकल एडगर राइजेस एट डे ब्रेक. सुबह सुबह उठता है, ये खाता है, वो खाता है, लेस करता है अपने बोर्ड को हेड. हमको नहीं पता वो प्रैक्टिकल है या नहीं. वेर एज इन द नेक्स्ट वन, एलियोशा हाउएवर नोज इज प्रैक्टिकल. देखिए, इन होप्स ऑफ इम्प्रेसिंग देयर क्लासमेट्स मोस्ट स्टूडेंट्स वेयर देयर न्यू विंटर जैकेट्स टू द प्ले. बट एलियोशा knows कि वार्म होगा इन द थिएटर, तो लीव्स द जैकेट. दिस इज यूटिलिटेरियन. जिस चीज की जरूरत है वो करो, जिसकी जरूरत नहीं है वो मत करो, प्रैक्टिकल बनो. That is utilitarian. All right. I think how many questions are we left with? 4, 5 questions actually. So 7 देखते हैं. Can be inferred, author believes there to exist a relationship between vulgarity of a word and vulgarity and. You'll have to go back for this one. Where do we find the word vulgarity? कहीं पे तो था. I think it had something to do with the number of syllables. ऐसा था शायद. पर ऐसा क्वेश्चन तो आपको चेक करना पड़ेगा, याद रहे ना रहे पता नहीं. Alright. So for this one you'll have to go back and you'll have to check. Last slide में तो definitely नहीं था. Do we have it here? Or do we have it here? So check it out. Or does it have something to do with its, how does it sound? Its sonic quality. या ऑप्शंस देख लीजिए फिर से. या फिर is it all of these? Syllables, its sounds and how it's used.
क्योंकि यहाँ अगर आप देखें फॉर द फर्स्ट वन हार्ड एंड डिफिकल्ट का the utilitarian word gets the job done, doesn't apologize for its uncouth nature. तो उसके मीनिंग पे तो आ रहा है. आगे you'll have to check for the others as well. If you look at strange and weird, अब यहाँ पे देखिए मीनिंग पे तो आ रहा है, दूसरी चीजों पे आ रहा है, यानी क्रूड सेंटिमेंट. तो अगेन ये भी मीनिंग पे सेंटिमेंट पे आ रहा है. सिलेबल्स चेक करना होगा, सिलेबल्स का उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन है या नहीं है. देख लीजिए. The word weird and strange have but one syllable. They actually both of them have one syllable. But the sentiment, the meaning. So again, it comes back to the same thing. Syllable से relate नहीं कर रहा है. What does it relate to? It relates to how it is used. And the way it sounds. So the answer should be B. Not exactly the number of syllables in it. Now, which one of the following from the passage represents the fact, not an opinion? One does not really need to go back for it to solve this one. यहाँ पे sentence पढ़ के समझ आ जाता है. Fact is something which can be verified. Opinion is, of course, someone's point of view.